శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలను శరణ కోరుతూ సంకల్పం శ్రద్ధగా పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవతే భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూలత
సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரீத சேத்தன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. இதோ பக்தர்களெல்லாம் கூடியிருக்கும் அந்த கல்யாண மண்டபத்திலே நேரடி ஒளிபரப்பிலிருந்து சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பக்தர்களை பெருமாளுடைய கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு தரிசனம் செய்து அவருடைய அனுகிரகத்தை பெறுவோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வாசனம். விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை செய்துதான் வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயப்படி எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய வேண்டும். ஆகவே பக்தர்களே, இன்று ஆனி மாதம் 18வது நாள் செவ்வாய்க்கிழமை ஏகாதசி மற்றும் பரணி கிருத்திகையுடன் கூடிய இந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஜெயவாரம் மங்களவாரம் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த திருநாளிலே பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் திருமலை கோவில் உள்ள இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அமிர்தம் பஜாமி भृक्पत्रिकस्य बबरीजमध्ये स्थित्वा सने कुसमये समुदीरयन्तम् श्रीशास्त्रधारमखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैककुरं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः. भृगुमरीचि अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य त्वरितवक्त्राद्याः पारयत्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. स्रोतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविने विकनसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्च स्तटीकृतं सूत्रं वैखानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणराजम्या. ओम मस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवात्यंत कर्मणि स्तंडिल परिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करित्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यं कर्मणे तदंग करकाराधनं करिष्ये. ओम धारासुप्त शिरमानशेषु धरत्तरित परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादयिष्ये गणोमि दत्तागं सितरगं सधर्मा यनमा पश्चिमा शुभतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतनमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमन्यन्त मरुतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे पुंवरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्परिमावाहयामि. वरुणाय नमः. आसनं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. प्रजेतसे नमः. रक्ताम्बरधराय नमः. यादस्पदये नमः. वरुणाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्. आग्नेयस्मात् जामहे त्वां विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो मयिराजन्ते रोदन्निधत्तां प्रेष्यामि देशो विपधानामनादरयामि शस्ताञ्जलिदां दधातु. पद्माकारमण्डले मुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि. शान्तमावाहयामि. हरमावाहयामि. अमितमावाहयामि. नित्यानुभाजनमावाहयामि. तत्क्षणे सूत्रपतिमावाहयामि. वामे जगामावाहयामि. सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. आसनं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि. अर्घ्यं समर्पयामि. आचमनीयं समर्पयामि.
పుష్పాన్ని సమర్పయామి గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి విశ్వక్సేన స్మృతో రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణః తస్మాత్ నాట్యమపాసీత కర్మణాం విఘ్నశాంతయే ఆరంభే కర్మణాం పుష్టిం విజ్ఞానాం ప్రసమాప్యజ కుర్యాత్ సపరివారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం ఓం భవద్భరణజ్ఞాతః సుపుణ్యం పుణ్యాహం వాచకిష్కే వాత్స్యతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితం అస్తు ప్రజాపతి ప్రజదాం ప్రజాపతిః శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శాం యంతు ఘోరాణి శాం యంతు పాపాని శాం యంతు గీతయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని ఓం అతో దేవా అవంతరో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానతరే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతిగతో వృతాని పస్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివీవ చక్షురాతరం తద్విప్రాసోపి పండ్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణసస్త్వరస్య ద్రవిణోదాస్సనరస్య ప్రియం సతే ద్రవిణోదా వీరపతే మిషన్నో ద్రవిణోధారాసతే దీర్ఘమాయుః యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్భక్కుర్వేదోపవ్యుషం యదా వై సూర్యముదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావది తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జగన్యం పశ్యేత్ తావద్ కర్మేత యత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః భుర్భువస్వరమస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమద్ఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం కర్మణి సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృత్తస్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ఓం భూః పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త నిర్మాణాయ పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంత కర్మణి స్వస్తిర్ధ్యాస్మ హవ్యేర్నమదో వసత్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాన వినా వర్ధయంతః సతం జీవేమ సరతః సమీరాః పూర్వోక్త కర్మణి పూర్వోక్త నిర్మాణాయ పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మరధ్యనాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మరధ్యనాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంత కర్మరధ్యనాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జే తథాతన మహేరణాయ దిక్షసే యో వశ్యమతమోరసస్తస్య భారయదేహనః ఉషతీర్మ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయాయ జన్వథ ఆపో జనయథా జనః ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విజర్షణిః యఃపోతా సపునాతుమా పునంతు మా దేవ జనాః పునంతు మనబోధయ పునంతు విశ్వ ఆయవః జాతవేదః పవిత్రవదే పవిత్రేణ మనాహిమా శుక్రేణ దేవదీప్యతే అగ్నే కృత్వా క్రతూగుం వృణు యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితరమంతర బ్రహ్మణేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవిదః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతి దేవ్యాగాత్ యస్యే బక్వే స్తనవో వీతపృష్ఠాః తజావదంతః సదమార్త్యేషు వజగ్స్యామపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మాపనాత్ వాదః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసాపయోభిః అర్తావరీ జిగ్నిగే మాపునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్టైరుక్తే వమన్మభిः అగ్నిరక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिनं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमधा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयम् ओदं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहवा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः मा जातवेदामूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छयो रावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिष देवार्चजो मार्चयन्तां दक्षिणायान्तिष मासाः पितरो मार्चयन्तां प्रदीप्यान्तिष गृहा पशवो मार्चयन्तां
उदीत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ता मूर्धायान्ति श्रीकृष्णः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्ता मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तान् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त वास्तोष्पदे प्रतजानी कस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतिदन्नो चतुष्मशन्न येधित्विपदे सिञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्नजा सकं सदादे सक्षेमहिरन्वया गातुमत्या आपः क्षेमपतयो ये वर्णो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सुषेवयेथिनः शुभगं शुभाम् நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். ஆனந்த நிலைய வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனை சேவிக்கலாம். வேங்கடமலையில் ஸ்ரீனிவாசன் எழுந்தருளி இருக்கும் விமானத்திற்கு ஆனந்த நிலையம் என்று பெயர். உயர்ந்த ஆனந்தத்தை உடையவனாக இருப்பதாலும் இதற்கு மேல் வேறொரு ஆனந்தம் இல்லாத ஸ்வரூபத்தை உடையவராக இருப்பதாலும் அவர் உறைந்துள்ள விமானத்திற்கு ஆனந்த நிலையம் என்று பெயர். தான் மட்டும் ஆனந்தமாக இல்லாது தன்னோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அனைவரையும் கூட தன்னுடைய நிலைக்கு உயர்த்தி தன் ஆனந்தத்தை அளிப்பதாலும் இந்த பெயர் ஏற்பட்டது. விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்திலே ஆனந்த என்றொரு நாமம். மேலும் விமானம் என்கின்ற பதத்திற்கு அளவில்லாதது என்றொரு பொருள். ஆக பகவானுடைய கலைகளில் ஒரு கலை விமானத்தில் இருப்பதாக ஆகம சாஸ்திரங்களிலே பேசப்படுகின்றன. இப்படி இம்மையிலும் மறுமையிலும் வேண்டியதை தருவதால் இவர் மகா ஆனந்த மூர்த்தி என்று அழைக்கப்படுகிறார். திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்திலே மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து திருத்துழாய் அக்ஷதை போன்றவைகளால் தேவதைகளை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த திருமுலை சாற்றுதல். தேவர்களெல்லாம் வந்து பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்பதற்காக வந்திருக்கும் அவர்களை வரவேற்பதுதான் இந்த திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, கருடார் உடனே ஆனந்த நிலைய வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை செவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் செவிக்க இருப்பது ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை. ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். ரக்ஷா பூஜை என்பது எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே அணிவிக்கப்படும் கயிற்றிற்கு முறையே பூஜை செய்வது. அதிலே நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயா சூத்ரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு முறையே பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. செவிக்கலாம் திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் SVBC தொலைக்காட்சி மூலம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். திருமலையப்பனை சேவிக்கலாம். கோவிந்தா கோவிந்தா. ஓம் ஸ்ரீசமாவாஹயாமி சஹஸ்ரீருஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி ரக்ஷாசூத்ர அதிஷ்டான தேவதாभ्यो நமः சேஷாய நமः ஆசனம் சமர்ப்பயாமி பாத்யம் சமர்ப்பயாமி अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतर नर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोजरेव सूर्या चन्द्रमसा विव
पुनर्दधदाज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्यानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसन्देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिमारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यं प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिहं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागं शुभान् ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் ரக்ஷா பூஜையை சேவித்தோம். அடுத்ததாக ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். திருமலை அப்பன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால், மாமன்னர்கள் எல்லாம் ஏத்தும் மலை என்றும் அந்த எம்பெருமானுக்கு அந்த மலைக்கு பெயர். திருமாலையே பாடிய ஆழ்வார்கள் 11 பேர்களில் தொண்டரடி பொடியாழ்வார் தவிர 10 ஆழ்வார்கள் பாடிய திவ்ய தேசம் திருவேங்கடம் எனும் திருப்பதி திருமலை கோவிலாகும். திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்களின் எண்ணிக்கையில் முதல் இடத்தை திருவரங்கமும் 274 பாசுரங்கள், இரண்டாவது இடத்தை 203 பாசுரங்கள் பெற்ற திவ்ய தேசம் திருவேங்கடமலையும் ஆகுமாம். ஆக பெரியாழ்வார்கள் 7, ஆண்டாள் 16, குலசேகர ஆழ்வார் 11, திருமழிசை ஆழ்வார் 15, திருப்பான் ஆழ்வார் 2, திருமங்கை ஆழ்வார் 62, பொய்கை ஆழ்வார் 10, பூதத்தாழ்வார் 9, பேயாழ்வார் 19, நம்மாழ்வார் 52மாக 203 பாசுரங்களை பாடி திருவேங்கட மாமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் வேங்கடநாதனை புகழ்ந்துரைத்தார்களாம். பக்தர்களே, எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த திருமலையிலே குடிகொண்டிருக்கும் அந்த திருமலை அப்பனை நாம் தினந்தோறும் இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம் என்றால் அது நம்முடைய பூர்வ ஜென்மத்திலே செய்த புண்ணியத்தினால்தான் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் திருமலை அப்பனை செவிக்க வேண்டும் என்றால் மனதார கோவிந்த நாமங்களை கூறிக்கொண்டு மலைக்கு வந்து நடந்து செல்பவர்களும் சரி, பேருந்துகளில் செல்பவர்களும் சரி, பகவானை மனதார நினைத்து கொண்டு செவித்தால் அந்த பகவான் நம்முடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் தீர்ப்பான். துஷ்ட சிக்ஷனை சிஷ்ட ரக்ஷணை என்று அந்த எம்பெருமான் நமக்கு அனைத்து கஷ்டங்களையும் தீர்த்து ரட்சிப்பவன். அப்படி ரட்சிப்பவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பகவானை வைஷ்ணவ ஆலயங்களிலும் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களும் ஏராளமான பேர்கள் பாடி அவருடைய அந்த கருணா கடாட்சத்தை பெற்றுள்ளார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையிலே எழுந்தருளிருக்கும் வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. திருமலை அப்பனை செவிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் முன்பு பழைய காலத்திலே பகவானுடைய அந்த திருவடிகளை செவிக்க வேண்டும், திருமலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் விசேஷமாக மஞ்சள் வஸ்திரங்களை அணிந்து கொண்டு வீட்டிலே புறப்பட்டு விரதம் இருந்து அந்த பகவானை சேவிக்க வருவார்கள். ஆனால் தற்போது வசதிகள், நவீன காலத்தில் வசதிகள் அதிகமான ஆனதினால் பேருந்துகளிலும் வந்து பெருமாளை சேவித்து கொண்டு செல்கிறார்கள். அவனை நம்பினார் கெடுவதில்லை என்பது போல அந்த பகவானை சேவிப்பதற்காக 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறையும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பகவானை சேவித்து கொண்டு செல்கிறார்கள். திருமலைக்கு வந்தால் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என்று சொல்லுவார்கள். அதே போல அந்த பகவானை செவிக்கலாம். இதோ நாச்சிமார்கள் இருவருக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம், ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ராமாயணத்திலே நமக்கு அந்த சதா சர்வ காலமும்
ஆஞ்சநேயர் ஜெபிக்கும் ராமநாமத்தை கூறிக்கொண்டே ராமாவதாரத்திலே எம்பெருமானை செவிக்கலாம். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை ஹனுமனுக்கும் சிறந்தது ராமபிரானையும் செவிக்கலாம். நவமி திதியிலே புனர்வசு நட்சத்திரத்திலே அவதரித்த அந்த ராமபிரானை சேவிக்கும் பொழுது ராமநாமத்தை கூறிக்கொண்டே சேவிக்கலாம். ராமநாமம் என்பது தாரக மந்திரம். அந்த தாரக மந்திரத்தை எப்பொழுதும் உச்சரித்து கொண்டிருந்தால் பகவான் அருளிச் செய்வார் என்பது. அதேபோல் அந்த சதா சர்வ காலமும் ராமபிரானை நினைத்து கொண்டு அந்த ராமநாமத்தை ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் ராமாவதாரத்திலே அங்கே இங்கே திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளியிருக்கும் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். இதற்கு இடையிலே அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே அந்த ஆத்ம ரட்சைக்கான கயிற்றினை அணிந்து கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே, திண்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே, சென்மமும் மரணமும் என்று தீருமே, இம்மையே ராமா என்ற 2 எழுத்தினால் என்று புகழ்கிறார்கள். அப்படி அந்த பகவானை சேவிப்போம். அக்னி பிரதிஷ்டையை சேவிக்கலாம். யக்ஞ ரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்துக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. आर्यं शुद्धोरत्नानि शुद्धोवृत्राणि विग्रहे शुद्धोवाचं शिधासते मयि देवात्रमिणमाजलन्तां मय्यासेनस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोता रावणयन्तपूर्वे निष्ठास्यामधर्वासुवीराः मत्यं युदन्तमभयानि हव्याकोतिः सत्यामनसौमे अस्तु ये नोमानिकाङ्कृतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे ओम जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्च तपसो यत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनजन्यो मयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुचिता जक्षिदेवान् आयुर्ता अग्नि हविषो दशानो घृतप्रदीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् विषेमतस्सुरुजो वेन आवह सबद्धया उपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्गरमञ्जन्द्रादो साधन्यं विरुत्यकं सभेगं तस्मणं योतराज तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि किन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामर्थयत्तन्नागस्य पृष्ठे इदमानोतु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं इदमानत्यधीः ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतामर्थयत्तन्नागस्य पृष्ठे इदमानोतु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञयेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशंस पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रथमनात् प्रच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पुमो अग्रे गोमोग्रजमं यज्ञं न यदाग्रे यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि यामि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छाप्रणयं यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे यजमानोस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ॐ प्रणय सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छाप्रणयं यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे यजमानोस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ॐ प्रणय ओमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तुरः इदं वदन्ते कृतभट्टामदागसहस्रपोषम् यजमानेऽन्यञ्चदेः कोपो जिनक्ति समो जिनक्ति संविशन्तान्ते वीरविषपात्राणि देव इत्यादि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि मृणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि
कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिर्नोभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्नोभामि इन्द्राय दृष्टिर्नोभामि अग्नये दृष्टिर्नोभामि सोमाय दृष्टिर्नोभामि अग्नये दृष्टिर्नोभामि सोमाय दृष्टिर्नोभामि अग्नि सोमाभ्यां दृष्टिर्नोभामि प्रजापतये दृष्टिर्नोभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्नोभामि इन्द्राय दृष्टिर्नोभामि वसुभ्यो दृष्टिर्नोभामि मरुद्भ्यो दृष्टिर्नोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्नोभामि आपावोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे दृष्टिर्नोभामि बृहत्तये दृष्टिर्नोभामि मित्राय दृष्टिर्नोभामि वरुणाय दृष्टिर्नोभामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्नोभामि अश्विभ्यां दृष्टिर्नोभामि पूष्णे दृष्टिर्नोभामि कक्षाय दृष्टिर्नोभामि कक्षदेवत सोमाय दृष्टिर्नोभामि औपासनयज्ञाय दृष्टिर्नोभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्नोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्नोभामि आद्यन्तर्पेदस्त्रयामि जलन्तर्पेदस्त्रयामि अग्नेत्योदर्शि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरिदग्मरक्षोऽन्तरिदा अनादयः प्रतिष्ठग्मरक्ष प्रतिष्ठा अनादयः प्रतिस्त्रावणात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्रावणात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादपदावणात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यत्स्या अक्षत आद्स्य चरुभिः यमामेकमेष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियतं च प्रयतं च अर्पतं च न्यर्पतं च समत्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्धस्य यमामेकमेष्टकाधेनवः सन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः विषप्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्यगितमक्षयमर्पणमानया नयन्तयत्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्तमर्तस्वदेतमर्तयदास्मान् प्रजगापशब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधयस्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तम् प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहत्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः नमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतीन्ममग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सखिपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यन्तकर्मणि उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसुवा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य मागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वदयतो वृदानि विस्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो मोजाग्रवागं समिन्धरे विष्णोर्यत्रं पदक स्वाहा नों भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः नमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतीन्ममग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వేడే మూలిందరో విభవము నేడు వేడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమి వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమది సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఖనసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండల మండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తం దిశుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోపతే సంయమనీ రక్షోపతి సింధుపతి గంధవత్యలకాపతి కిశోపతీత్యుష్టదేవ పురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పిత దిక్షేర సుప్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకిం పురుషహారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామా తవ సంఘాత కాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావశానే ఏకైకతనాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంత పరమాజిపేజ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండరాజకస్య శ్రీభూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనో మునీంద్రమదానసారవిర్బ్రహ్మాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశార్ంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभे शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यवन आप्नुवान और्वैदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः संकल्पतनयाम् उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैर्ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकदिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलावतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಓಂ ನಮೋ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கிறோம். அந்த மாங்கல்ய பூஜை என்பது தாயார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க வேண்டிய மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே பூஜை செய்து அதன் பின்பு அணிவிக்கப்படுகிறது. இன்று ஏகாதசி விரதம். பல புராணங்கள் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும், அதனால் என்ன பலன் என்று நமக்கு தெரிவிக்கிறது. இந்த ஏகாதசியின் பெருமையை கூறியவர் யார் என்று பார்த்தால் கண்ணபிரான், அதாவது கிருஷ்ண பகவான். நாகலோகம் தங்கம் வெள்ளி நவரத்னங்கள் நிறைந்த இன்பலோகம். இதனை புண்டரீகன் என்ற நாகராஜன் ஆண்டு வந்தானாம். அங்குள்ள நாகர்கள் இஷ்டப்படி உருவமெடுத்து கொள்ள வல்லவர்கள், விரும்பிய இடத்திற்கும் செல்ல சமர்த்தர்கள். நாகலோகத்திலே வசித்து வந்த கந்தர்வர்களில் லலிதன் என்பவனும் அப்சரசுகளில் லலிதை என்பவளும் மனமொத்தவர்களாய், அழகில் சிறந்தவர்களாய், செல்வம் நிறைந்தவர்களாய் அங்கே வாழ்ந்து வந்தார்களாம். லலிதன் தன் கானத்திலே மிக தேர்ச்சி பெற்று அனைவரையும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடை செய்தானாம். அதேபோல் ஒரு நாள் நாகராஜன் லலிதனை தன்னுடைய சபையிலே பாட அழைத்தானாம். அவன் தன் மனைவியை கன நேரமும் பிரிந்திருக்க சகிக்க மாட்டான். அதனால் அவன் தனியே வந்து அரசவையில் பாடும்பொழுது தன் மனைவி நினைவால் ஸ்வர லயங்களில் தவறு ஏதாவது செய்துவிட்டானாம். ஆக கார்கோடகன் என்ற மந்திரி அரசனிடம் கோள் கூறினான். நாகராஜனுக்கு கோபம் வந்து, லலிதனே, நீ என் அவையில் சாம்பவரனாய் தவறாக பாடினாய், நீ அரக்கனாக மாறிவிடு என்று சாபமிட்டானாம். உடனே லலிதன் என்பவன் அரக்கனாகினான். மலை போன்ற முகம், குகை போன்ற வாய்,
10 மைல் நீள கைகள், பயங்கரமான கண்கள், 80 மைல் உயரமுள்ள உடம்பு இவற்றுடன் பயங்கரமாக விளங்கினான் அந்த லலிதன். இப்படி லலிதை ஓடி வந்தாள். என்ன செய்வேன், இந்த சாபம் எவ்வாறு போகும் என்று அழுது புலம்பினாளாம். கணவனுடன் காட்டிலே சஞ்சரித்தாள். அவள் தயை இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் அடித்து கொன்று தின்று கொண்டிருந்தான் லலிதன். ஒரு நாள் அவளோடு சென்ற பொழுது ஒரு முனிவரது ஆசிரமத்தை பார்த்து ஆசிரமத்திற்கு சென்று அந்த முனிவரை சேவித்தாள். முனிவரிடம் அவள் தான் வீரதன்வா என்ற மகாத்மாவான கந்தர்வனுடைய மகள் என்றும் தனது பெயர் லலிதை என்றும் தன் கணவனின் சாப விமோசனத்திற்கு தங்களை பார்க்க வந்தேன், எங்களுக்கு ஏதாவது வழி கூறுங்கள் என்று கேட்டாளாம். முனிவர் அந்த ஞான கண்ணிலே அனைத்தையும் பார்த்து லலிதையிடம், விரைவில் சித்திரை மாத சுக்ல பக்ஷம் ஏகாதசி வருகிறது. விரும்புவோர் விரும்புவதற்கெல்லாம் கொடுப்பதால் இதற்கு காமதா ஏகாதசி என்று பெயர். இதிலே விரதமிருந்து அதன் பலனை உன்னுடைய கணவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்தால் அவனுடைய அந்த ராட்சச உருவமானது போய் மானிட உருவம் வரும் என்று கூறினாராம். லலிதையும் சிரத்தையுடன் விரதம் நேர்த்து அவனுக்கு பலன் அளித்தாள். அவன் சாபம் நீங்க பெற்று மேலும் அழகனாக திகழ்ந்தானாம். தங்க விமானம் வந்தது. இருவரும் ஏறி இந்திரலோகம் அடைந்தார்களாம். இப்படி ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் வரும் ஏகாதசிற்கு ஒவ்வொரு பலன், ஒவ்வொரு பெயர். ஆக சித்திரை மாதத்திலே வந்த காமதா ஏகாதசியை அவள் பூஜை செய்து தன்னுடைய கணவனை காப்பாற்றி கொண்டாள். அதேபோல் ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் ஏகாதசி என்று நம்மால் முடிந்தவரை உபவாசம் இருந்து பகவானை ஸ்மரணம் செய்து கொண்டு அந்த பகவானை செவித்தோமானால் நம்முடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்ந்து நமக்கு அனுகூல பலனை கொடுப்பவன் அந்த வேங்கடவன், அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா, மகாவிஷ்ணு என்று தசாவதாரங்களிலே நமக்கு அனைத்தையும் கொடுப்பவன். அப்படிப்பட்ட அந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்தால் பிரம்ம வித்யாதி பாபங்களை போக்கி நமக்கு என்ன கோரிக்கை, அதாவது நியாயமாக இருக்க வேண்டும் அந்த கோரிக்கை, அப்படி கோரினால் நம்முடைய ஏகாதசி பலனை அவன் கொடுப்பானாம். அப்படிப்பட்ட அந்த மகாவிஷ்ணு திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு புஷ்பங்களாலும் திருத்துறை, அதாவது துளசியாலும் அர்ச்சனை செய்து தாயார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு ஷோடச உபச்சாரங்கள் கூட செய்து கொண்டிருக்கிறார். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா 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 என்று அந்த வரப்பிரசாதியை செவிக்கலாம். அனைவருடைய அஜ்ஞானத்தையும் போக்குபவன், கஷ்டங்களையும் போக்குபவன், துஷ்ட சிக்ஷணை சிஷ்ட ரக்ஷணை என்று ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமாக நாமத்தை வைத்துக்கொண்டு நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு 108 திவ்ய தேசங்களிலே வாழ்பவன். அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமான் திருமலையப்பனை சேவித்து கொள்ளலாம். இந்த ஏகாதசி என்று செவ்வாய்க்கிழமை ஜெயவாரம் மங்களவாரம் என்று கூறுபவர்களுக்கு அனைத்தும் மங்களங்கள் உண்டாகட்டும், அனைத்து விஷயங்களிலும் ஜெயம் உண்டாகட்டும் என்று சேவிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டை பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா வைகுண்டவாசா ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவிப்போம். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்திற்காக அர்ச்சக சுவாமி சென்று கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுடைய கழுத்திலே அந்த மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிப்போம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்களிடமும் பகவானிடமும் காட்டி அந்த மாங்கல்யத்தை தாரணம் செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு மாங்கல்ய தாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம்
ప్రజాపతి స్తోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవీ నమః మాంగళ్యధారణ ముహూర్త స్వముహూర్త అస్తు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు. మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా బోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసినతడు సత్తండా అగ్నే మమ భవతే నేతిష్ట అస్యాపశతోవ్యష్టౌ అవయక్ష్మణావరణకం నడానో వేహమృదేకం సహవోనయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్యా సన్మనసాహితః అయాసరహవ్యమోహితేజానో దేహిభిషడక్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవతమిదప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమద్ఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండరాజకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యకర్మణి ఉపాసనాగ్నో లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతమిద ప్రసభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా భూతాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య శుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అణు విశ్వాముదత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః. ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య శుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అణు
విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయందార్యుపభ్రూతే క్నో లాజానాపపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉతాయుషా స్వాయుషో దోషధీనాగుం మృధేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భవస్వస్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః నమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిదప్రాధామీః అస్య దేవదేవ సమభూతో నారాయణస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికమహోత్సవాఖ్యక్రమణి सर्वप्रागश्चित्तार्थमतो देवादिषट्मैष्टमहमं होष्ये अदितेनमन्यस्वा नमदेनमन्यस्वा सरस्वतेनमन्यस्वा देवसविदप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेमदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यदगतो वृतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे विचक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजाक्रमाकं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम समस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः नमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवसर्वतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्खिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मधात् पुण्यार्थं उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेनमन्यस्वा नमदेनमन्यस्वा सरस्वतेनमन्यस्वा देवसविदप्रसवा यतस्य कर्मणोऽतिरेकं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वान् सर्वग्रस्विष्टकृतोदङ्गरोत स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दोहराहुतीनां कामानां समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नर्तये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रे वादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभोदग्निस्तत्तनः जातमेदापितर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्दातरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय वञ्चक्षणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तरिच्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितशतेजोषतेजो मयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तर्षे सप्तधा प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा युनिन्द सप्तयो नीरावनुत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् निष्ठुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेद भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जेनं वेद चेनं ज्योर्जेनं पृथिवी जीर्णं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव जीर्णं समन्ताम्रहरहविषा कृतेन समादित्येन समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतु वेदस्तृप्यतु द्यौस्तृप्यतु पृथिवीस्तृप्यतु ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितर्पिता महाप्रपितामः साक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहन देवताभ्यो नमः गिरासकं गिरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षेतमसि मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्ठो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयधम्माजीक्वर्धमत्रमेधामस्मिन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधि मपनया दक्षिणतः परिधि मपनया उत्तरतः परिधि मपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमूख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्या अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्ततिमं गच्छततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनम्
भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्दयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः पश्यतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षया जन्मः आपो जन यथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मय मेधां मय प्रजा मय यज्ञस्तेजो दधात् मय मेधां मय प्रजा मय इन्द्रियं दधात् मय मेधां मय प्रजा मय सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतं तमया देव परिपूर्णं तदस्त्रे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषामधिष्ठानां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्यात्मनीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा संगिरास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्यात्मनीं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः आज्योपहारं निवेदयामि यज्ञेश्वराय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ஓம் நமோ நாராயணாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதலை செவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியங்களை செவிக்க இருக்கிறோம். அந்த வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். புரட்டாசி மாத பிரம்மோற்சவத்தின் பொழுது திருமலையப்பன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சூடி களைந்த மாலையை அணிந்து கொள்வது ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். அதேபோல் அங்கே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று தினந்தோறும் அந்த மாலைகளை தொடுத்து அவள் அணிந்து கொண்டு பெருமாளுக்கு அனுப்புவாள். அப்படி பாமாலையுடன் பூமாலையும் சூடியவள் ஆண்டாள் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார். இதோ மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் ஆரம்பமாகிறது. மாலைகளை மாற்றும் படலம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எம்பெருமானுடைய மாலையை அணிவிப்பதற்காக, கழுத்திலே அணிவதற்காக. பகவானை வேண்டலாம், அதாவது சேவித்து கொண்டு அந்த பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சத்தை பெறலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனை தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது எம்பெருமானுடைய ஒரு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறாள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறார் அந்த அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மலையப்பன் அனுப்பும் மாலை மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டிக்கு.
பூமி பிராட்டி அந்த மாலைக்காக எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறாள். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே தினந்தோறும் தான் அணிந்த மாலையைத்தான் அணிந்து சூடி களைந்து கொடுத்த மாலை அது. ஆக அப்படிப்பட்ட பிராட்டி இதோ எம்பெருமான் அனுப்பிய மாலையை தன்னுடைய கழுத்தில் அணிந்து கொள்ளுகிறாள். தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த வேங்கடவனுடைய மற்றொரு பிராட்டி பூமி பிராட்டி, அந்த ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த நாச்சியார். அவள் அனுப்பிய மாலையை மீண்டும் பகவானுக்கே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா, சஹசிரநாமார்ச்சகா கோவிந்தா கோவிந்தா. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் மலையப்ப சுவாமியாக சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த இரு பிராட்டிமார்களையும் பகவானுடைய பக்கத்திலே அமரச் செய்கிறார்கள் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே. அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே, உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, ஏடு கொண்டலவாடா கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. ప్రియం వెంకటేశ
वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ